ठीक है, देन हम बढ़ते हैं अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ. So financial emergency is provided under Article 360. So I think we know that Article 352 is providing for national emergency, 356 is for state emergency, and 360 is for what? Financial emergency FE na. So you have to remember all these things. Whenever you are writing about all these things, you need to put all these articles also. So also known as, what is that? It is also called economic crisis emergency. But we have never ever use this article throughout our constitutional history. But twice a year we are more than 100 times we use the president rule. And national emergency we have imposed thrice, but financial emergency we have never ever imposed in the India. So what are the ground? The question is the क्या ground है जिसकी हमें declare कर सकते हैं financial emergency. So under Article 360, so president can declare financial emergency if he satisfy that the financial stability or credit of India. I think we all know about credit score, and any part of its territory is threatened. In that case, president can invoke on the recommendation of obviously cabinet. President cannot do anything on its own. ये चीज याद रखो. Union, at the union level, president can't do anything without ardent advice of the council of ministers. But at the state level, governor can do anything, because governor is having lot of discretionary power under Article 263. But president is having no discretionary power. There should always a council of minister headed by the prime minister, always at the center. ऐसा कोई situation आ ही नहीं सकता. There should not be any situation where there will be no council of minister headed by prime minister to ardent advise the president. If there is no prime minister or council of minister, in that case ardent advice is invalid. So you have to remember that. This provision give union government sweeping control over the fiscal governance both at the centrally and the state. So that means though India is having a federal structure, but during financial emergency, entire government structure in fiscal matter, it is transformed into a unitary. The union government, union parliament can give all the directions to the state government. Either they can cut the salary, either they can reduce their expenditure. So all the suggestions they can give to it. Na? So next is parliamentary approval and duration. So proclamation must be approved by both houses of the parliament 2 months. Na? आपने देखे होंगे. So in case of president rule, it is also 2 months. In case of financial emergency, it is also 2 months. But only in case of national emergency, it is only 1 month. Na? Samjho, there is uniformity of 2 months everywhere, but because we have amended in 44 Kaushal Amendment to protect misuse, so we have reduced that 2 months to 1 month. So इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए, पूरा clear होना चाहिए. So in case of Lok Sabha, it is also following condition must be applied. So Rajya Sabha need to be approved meantime, and after formation of Lok Sabha, it must be approved within 30 days of its sitting. Let's say today we have formed our Lok Sabha, and within the 30 days they have to approve, na? They have to approve within 30 days. If they don't approve, then the emergency will automatically cease to operative. Na? That is what you need to understand. So once approved, financial emergency will remain force until revoked by the president. President can revoke anytime by subsequent issuing proclamation. Subsequent time पे वो एक दे सकते हैं कि हाँ ये चला गया तो दे सकते हैं. So unlike national emergency, president rule, there is a limit. No time limit or periodic approval is required. So that means once it is approved, it will be continue forever. For example, once we have implemented the, let's say, financial emergency, no need for 6 months approval. So once it is there, so it will be continue unless until either president can revoke or it can be disapproved by the parliament itself. ठीक है, ये चीज समझ लेना. So आपको यहाँ से फंसा सकता है. So this statement can be, in case of financial emergency, it need continuous approval of the parliament in every 6 months. So आपको लगेगा हाँ होता तो था, but here it is not applicable. ठीक है, rest financial national emergency and president rule, there it is applicable. So ध्यान रखो, देखो छोटे छोटे ट्रिक से कितना अच्छा क्वेश्चन बना के फंसा देगा. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वट एवर मेंशन्ड इन योर लक्ष्मीकांत, वट एवर मेंशन्ड इन योर स्टैंडर्ड बुक, देयर शुड नॉट बी एनी एरर. ये आपको गारंटी होना चाहिए. मैं तो यहाँ एक भी एरर नहीं करूंगा. ठीक, ये अगर आप गारंटी हो ना, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता है. So next is effect of the financial emergency. So if imposed led to the significant centralization of financial authority. So if we are imposing, let's say, financial emergency, so everything became centralized. So union fiscal control over the state. So executive authority of the union extend over the financial matter of the state. So that means union government can issue directions to the state how they are going to do their expenditure in the day-to-day affairs. So they can say that you need to reduce the salary of all the state officials, including the Supreme Court judges also. So money bill, other financial legislation passed by the state legislature may be reserved for president consideration. Even the money bill they have passed, they have to reserve for the president assent also.
So salary reduction, the president may issue directions to reduce salary and allowances of person serving under the state government. देखो, to reduce the salary allowances, governor should give the recommendation like that, but here it is centralized, so that is the reason president is giving the recommendation. So reduce the salary allowances of person serving in the union also. So that means president power is include to issue direction not only to the union officials but also to the state officials also. So we can see this the federal structure becoming a unitary structure during financial emergency in fiscal matter, मतलब finance matter में, not every matter. The judges of Supreme Court salary can be reduced. Judges of High Court salary can be reduced. Even during the financial emergency, you can reduce the salary of Supreme Court judges and High Court judges also. ये चीजें remember करो. दोनों का salary को हम cut कर सकते हैं. So criticism. So I think already we have seen that there are a lot of criticism regarding the emergency provision that we are adding. So particularly regarding the national emergency, because during national emergency it is sweeping power. People don't have the fundamental right and they are misused in the 1975. So that create a lot of apprehension. People believe that by adding that chapter of you can say the national emergency, we are weakening our foundation of democracy. तो इसकी वजह से बहुत सारे डिबेट हुआ है. So अगर if there is a question, so what are the criticism of emergency provision, or though इस type of question आया, though the emergency provision is a safety valve but there might be misuse of it, so discuss. So in that case you have to write all this criticism ना. So it violates the federal principle of Indian constitutions. So एक question लिख लो, question लिख लो. So though the emergency provision is act like a safety valve, though emergency provision is act like a safety valve, but it violate there is a large criticism against it. Though emergency provision is act like a safety valve, but people there is a lot of criticism against it. Though the emergency provision is act like a safety valve, there is a lot of criticism against it. तो ये आप 10 मार्कर का लिखना है. So first part you have to talk about how it is acting like a safety valve. First you can talk about national emergency. मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको लिखोगे. एक पेज ऐड कर देता हूँ. अगर पढ़ रहे हैं तो फिर पार्ट करवा देते हैं. Then you can talk about here the broad things you can talk about. Which part deals with the emergency provision? बताओ. 18. Article 18. So here you can start part 18 of Indian Constitution provide for the emergency provision, and we have borrowed it from the Government of India Act. 1930. हाँ 1935 and it includes 3 type of emergency. आप ऐसे बना सकते हो ना, 3 type of emergency. नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल. आर्टिकल लिख देना 352. ये आपका इंट्रोडक्शन बन गया. This is what your introduction. Then we are calling this as a safety valve. So that means it's a positive thing. Safety valve क्या होता है? प्रेशर कुकर में आपने देखे होंगे सीटी मारता है. क्यों मारता है? उसके साइड में एक होते हैं ना, तो अगर वो सेफ्टी वाल्व नहीं होगा ब्लास्ट कर जाएगा. सो यू हैव टू टॉक अबाउट हाउ इमरजेंसी प्रोविजन इज ए सेफ्टी वाल्व ना. देखो दिस वर्ड यू कैन यूज इन योर मेन कंक्लूजन आल्सो ना. द इमरजेंसी प्रोविजन कैन एक्ट एज अ सेफ्टी वाल्व्स. जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं, दैट कैन बी आल्सो योर इंट्रोडक्शन. सम टाइम इट इज योर कंक्लूजन आल्सो. यू कैन टॉक अबाउट नेशनल इमरजेंसी. In national emergency you can talk about internal armed rebellion na. Then you can talk about sometime we have to deal with harsh terrorists. For example, take the example of Manipur na. Then you can talk about external. I think you know that we are living with 2 neighbors who are very hostile like China and Pakistan. So we have to deal with them. So we need that. So it's a safety valve. Then you can talk about the state emergency. Whenever state government they are not carried out as per the provision of the constitution, they are misusing their powers, they are supporting promoting communal violence. So in that case we can implement to bring ensure that state are carried out as per the provision of the constitution. And see you can here it is 2 point. So here you can write 2 point also if possible. Then here see you can talk about financial emergency, how financial emergency is helping in meeting the need of the financial obligation. So I think in this way here it is 2 point, here you can write 2 points, here it is 1 point. So 5 points is there na. So how it is acting like a safety valve. Safety valve is something that warn before blasting na. So you can just write that. Then you can talk about their criticism, and this criticism part is already here na. So you can say that
it is going against the federal structure. So our constitution is supposed to be a federal structure. State is having equal power, not equal power, but state is having their own existence from the constitution. But the single provision transform our federal constitutions to the unitary constitution without any formal constitutional amendment. तो आप समझ सकते हो, अगर गवर्नमेंट को बहुत पावर चाहिए, so they can simply pass this emergency provision if they have majority, and once they have passed this provision, they can suppress anything. So federal provision को destroy करेगा. Central government could become all powerful, compromising state autonomy. Then separation of power against union executive might be override all other state institutions. Okay, so next is democratic rights, because your fundamental right is weakened, suspended, and though you have the fundamental right, but their enforcement is suspended. So that means you cannot go to the Supreme Court, and Supreme Court will become helpless during the emergency also. Then constitutional spirit, so check and balances between central state is eroded. So misuse risk. So B.R. Ambedkar acknowledged that risk of political misuse, saying that I do not altogether deny. This can be your conclusion, na? This can be your conclusion also. Okay, so you can say while financial emergency under Article 6 has never been invoked, sweeping nature gives center considerable power over the state fiscal independence. Na? So you can see. So I think by using all these things, you can use this also in your conclusion of this type of question also. Okay, misuse risk, you can give example of internal emergency in 1975. You can give how Indira Gandhi captured the power and misused that even without informing the cabinet, and later on, so suppress. Then you can give the example of ADM Jabalpur case tha na. ADM Jabalpur, they failed, Supreme Court failed to protect the people also. If Parliament passed a law and is clearly saying that you can kill anyone, in that case, Supreme Court said that yes, this is right, because they follow the procedure. So procedure established by law is followed by the Parliament. Law is prepared in a due procedure, proper procedure. So in that case, they can kill a person. But later on in Menka Gandhi case, they've corrected it. No, even if they follow all the procedure, enacted the law, but still our Parliament, our constitution is following due process of law. You cannot. No, law, whatever making it not only follow the procedure, but it should be just reasonable. It should be, follow, not only follow proper procedure, it should be just reasonable, it should be humanitarian. Okay, ये लिख पाओगे आप लोग? आगे बढ़े, आगे बढ़े. Yes, sir. मैं इसको पेस्ट करवा देता हूँ ताकि क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा. देखो, मैंने आपको फॉर्मेटिंग सिखा दिया. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड राइट एंड मूव फॉरवर्ड. ओके, ये नहीं होना चाहिए कि मैं दे दिया आपने नहीं लिखोगे, फिर देखो वही चीजें प्रॉब्लम हो जाएगा ना. मैंने ऐड कर दिया, ये पेज को बोलोगे तो मैं अभी सेंड करवा देता हूँ. 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा कंप्रेस करके, चलिए मैं ये पेज को फॉरवर्ड करवा देता हूँ अभी ग्रुप में. तो ये आप लोग लिखिएगा, लिखना चाहिए. चला गया कहीं. ओके, तो प्लीज इसका आंसर राइटिंग आप कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं. मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, रहने देते हैं, क्या प्रॉब्लम हमें. चलिए, तो आगे देखते हैं. नेक्स्ट आते हैं आपका. Yes. So next topic that we are going to discuss about the interstate relation. So already we have seen about center state. So our union government is here. Our union government is here, and state governments are like here. State government, state government, state government. So that is what called center state relation. But in between state. For example, Karnataka, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Odisha, Bengal. Then you can talk about UP, BR. So this is what called interstate relation. So it is not only harmonious relations between center and state, but also interstate relation is very important. जैसे आप समझो, आपका रिलेशन विद गवर्नमेंट इज ऑल्सो इक्वल इंपोर्टेंट लाइक योर रिलेशन विद नेबर. आपका नेबर अगर अच्छा नहीं है, म्यूजिक बजा के परेशान कर रहा है, तो आपका भी जिंदगी झंड हो जाएगा. Same thing, we also need to have good relation with our interstate also. So interstate relation in India refer to as constitutional. There are constitutional, administrative, and economy and political dynamics between the various state and union territory within the Indian federal framework. So Indian constitution envisages what kind of relation? Cooperation. So some of our relation between states are cooperation, some of there are coordination, and some of them are healthy competition among the states, while also providing mechanism to resolve dispute amicably.
So I think you all know that Article 1 talks about India as a union of state, not a federation of state. So that means two things. So India as a union of states means two things. What is that? Anyone? बताओ बताओ. Yes, yes. India as a union of state means what? There is two things. So state have no right. हाँ बताओ रोशन बताओ. रोशन बताओ बताओ. All states are come together and form the union. All states are comes together. No, this is what happened in USA. Sorry, sir. Just opposite. It Power is the invested. union. It is the union that created different state for administrative convenience. Okay. Second. What is the सर second ये चीज point? फॉलो यूएसए में होता है सर. USMA. This is the state government. They have came together to form this central government. Okay. This is called federal government. Okay. Central. They no, they are bound by the centrifugal force. But here, it is the union. It is created the state. हाँ. प्रभात बताओ second क्या होगा? What is the second provision? A state doesn't have power to separate from the union. Yes, state don't have power to secede from the union also. State के पास कोई power नहीं है. ठीक है, तो that is the reason we are not federal. We are a quasi federal. So our federal system is like similar to what? Our federal structure is similar to which country? Federal structure. हाँ आदित्य बताओ. यूके सर. आवर यूके में फेडरल है ही नहीं. यूके में तो यूनिटरी है. हाँ जिरबन बताओ. आवर फेडरल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू. So Canada. Yes, exactly. Excellent. Canada, and just like our governor system, their governor system is same. So our federalism is almost equivalent to Canada. Okay. चलिए कोई बात नहीं. So India follow a quasi federal. That means it look like federal but not fully federal, where unitary with diversity is maintained through carefully designated interstate relationship. So constitutional provision that govern interstate relation already we have seen. So article 11 basically, sorry, part 11 basically deals with legislative and administrative relation. 11 हमने देखे थे. 12 क्या था? Financial relation. And 13 basically deals with trade, commerce, intercourse among the states. So आपको ये तीनों को याद रखना पड़ेगा. 11 क्या है? Part 11 basically deals with legislative and administrative relation. Part 12 basically deals with financial relation. And part 13 basically deals with trade, commerce, intercourse among the states. ये बाबा याद रखना. आजकल ना मैं बताया ना यूपीएससी के पास क्वेश्चन ही नहीं बचा है. कहीं फैक्चुअल क्वेश्चन उठा रहा है तो कहीं चीजों पे हमें छोड़ना नहीं. मैंने बोला ना 40 क्वेश्चन हमें, मैं जो पढ़ा रहा हूँ देख लेना डायरेक्ट आएगी. ये चीजें आप अगर नहीं कर पाओगे मैं कुछ नहीं कर सकता. यहाँ से 40 के 40 आएगी. जो मैं आपको बात किया ना कि मुझे 80 बेस समय बन जाएगा. बाकी तुक्का मार के तो आप ला दोगे 40 मार्क्स. ठीक है, लेकिन ये जो 40 कोर मार्क्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चीजों को ध्यान रखना. आज से ही पढ़ना. ये मत सोचना कि मैं एग्जाम से पहले जो, मैं ये नहीं वो बोलूंगा कि आपको जनवरी के बाद पढ़ना है. अभी के अभी पढ़ के रख लो. जनवरी के टाइम पे रिवीजन करना है. उस समय आप ही एंजॉय करोगे. बाकी जो लोग अभी वेट कर रहे हैं ना वो पागल हो जाएंगे. इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से जागो. और ये जो लेजी होके पढ़े रहते हो ये नहीं चलेगा. ठीक है. सो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या होते हैं इंटरस्टेट रिलेशन में. फर्स्ट वन इज 261. सो ensure full faith and credit throughout the India for public arts, acts, records, and judicial proceeding of union and every states. So that means whatever may be the state, let's say Jammu Kashmir, their public acts, their records and judicial proceeding should be also recognized in Tamil Nadu. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हमने तो नहीं जानते. ऐसे नहीं होती है. So you should respect. Okay, that is what they are saying. So Article 261 Constitution of India. So full faith credit shall be given throughout territory of India, public acts, records and judicial proceedings. So the manner in which, the condition in which the act, record and proceeding prefer clause shall be proved and effective determined shall be provided law by the parliament. तो कैसे उसको recognize होना चाहिए, क्या फॉर्मेट है, वो पार्लियामेंट आपको लॉ करता है. The final judgment or order delivered passed by the civil courts in any part of the territory of India shall be capable of execution anywhere within the territory according to the law. ये जरूरत नहीं इतना, बस ये वाला प्रोविजंस को आपको याद रख लेना बहुत है. ठीक है. तो लाइक यू कैन से public act, record and judicial proceedings should be given due faith in all over the India. So second one is about the Article 262. It basically talks about Parliament to adjudicate dispute related to interstate river. So I think आपको पता होगा river जो है, देखो हमने तो बाउंड्री बनाया. ये मान लो एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है.
देन ये भी एक स्टेट है लेट्स से, तो रिवर ऐसे फ्लो होके जा रहा है 3-4 स्टेट में, सो इट इज मूविंग थ्रू 3-4 स्टेट. So that is what led to the upper riparian state. They are constructing large number of dams, so they are blocking the flow of river. So here they are blocking. So at the lower riparian state, they are not getting good amount of rainfall, river, you can say the water. So they might complain that our agriculture farmer might not get benefit from that. So that is what led to the dispute and conflict. Sometimes the powerful state, they can use the force also. So that is what led to the provision for settlement of interstate river water disputes. So which article basically talks about settlement of interstate river water dispute? It is Article 262. Allow the parliament to adjudicate a dispute related to interstate and bar court from interfering. तो कोर्ट को मना है इसमें इंटरफेयर करने के लिए. देखो क्यों ऐसे होती है, क्योंकि ये जो इशू है, दीज आर वेरी पॉलिटिकल इशू. देखो कोर्ट कैन नॉट सेटल ऑल दिस पॉलिटिकल इशू. सो आप ज्यादा मत पढ़ो, बस इतना समझो. देखो कोर्ट लीगल एस्पेक्ट से यू कैन नॉट सॉल्व ऑल दिस थिंग्स. You need some political aspect to solve this water issue. So that is the reason it is barred. Supreme Court or any court is barred from looking into all this dispute. ज्यादा पढ़ना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं इसमें आप पढ़ के पूरा टाइम वेस्ट करोगे, क्यों बार है क्यों नहीं है. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना. So Parliament may by law provide that adjudication of any disputes or complaint with respect to use, distribution, control of water in or any interstate or river valley. So देख सकते हो, it is exclude from the any other court also including Supreme Court. So Supreme Court का jurisdiction नहीं आता है interstate river water dispute में. So Article 263 provide for what? Interstate Council provide for establishment of interstate council for settlement of disputes. तो यहाँ से हम कुछ पढ़ लेते हैं. So what are the role and responsibility of the interstate council? So inquiring into and advising upon the dispute which may arise in between the states. ठीक है, दो अगर in future there might be dispute arise between two states, so in that case they inquire and provide suggestion. So investigating and discussing subject in which some or all state or union or more have common interest, so they can discuss the issue. Let's say some terrorism issue, let's say some drought. Let's say in South India there is severe drought, so might all state are impacted, so they can discuss there. During COVID-19 they can discuss how we are going to tackle the migrant crisis also. Now this is currently we are facing the fuel crisis, all this economic crisis. There they can discuss, so what kind of steps we can take together so that we can protect it. So making recommendation upon any subject, and in particular recommendation for better coordination policy action with respect to that subject. So they can give good recommendation so that there should be a better coordination among the people. Therefore, why I am using this exact word of constitution, because in paper you might get this exact word. So that is the reason I have picked directly the word they have used. So it shall be lawful for president by order to establish such council and to define nature of the duty to be performed by it and organization and procedure. तो आपको पता होगा ऑलरेडी हमने इंटरस्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश कर दिए थे 1990s में अंडर रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमीशन? Which commission recommendation we have established interstate council finally? After which commission recommendation? सरकारिया ARC2. नहीं सरकारिया. Okay. ठीक है. Okay, so this is all about it. So next we are going to see about nature of interstate relationship in India. So what are the nature of we are going to see? So first one, it can be cooperative relationship, collaborative and competition. So I think आपको पता होगा sometime I think कोई state PCS या UPSC पूछा था. So what are the different kind of relationship that we need to promote? So first one is cooperative relationship. So state often collaborate to solve the shared problems such as river water management, pollution control and regional infrastructure. ठीक है. So here joint project, river linking and coordinated disaster relief effort and wildlife protection corridor. For example, if there is a wildlife protection corridor between two states, let's say I think नीलगिरी, आपको पता होगा नीलगिरी is between which state? 3 स्टेट के बीच में है. वो क्या है? केरला, कर्नाटक and तमिलनाडु ना. So in that case they need what? Cooperation na. Because let's say there is a poaching, there is a you can say Naxal incident in the 3 states. So in that case they need cooperation among these multiple states. So next is collaboration. Collaboration means they are forming a you can say joint venture or special purpose vehicle like that. For example, if there is a railway that is passing, let's say Maharashtra to here it is let's say Tamil Nadu. So if it is passing through the Karnataka, so these 3 government, they can collaborate this project so that they can fund the project with the union government to establish this corridor na. So here we can say all these state government
The state work together with central government on a national initiative. For example, implementation of scheme like Ayushman Bharat, Digital India, disaster management protocol during COVID-19. Here we can say collaborative relation. Cooperation means you are just cooperating. Collaboration means actively participating something. Okay. जैसे बोलते हैं ना कोऑपरेशन करना. ये आदित्य. The disaster management comes under which list? बताओ कौन सा लिस्ट में आना चाहिए. State. स्टेट. ओके. कौन सा लिस्ट में आना चाहिए. हमने उस दिन पढ़े थे. आपने यूनियन लिस्ट में ले लिया. यूनियन लिस्ट उस दिन हमने पढ़े थे ना. उस दिन हमने पढ़े थे. सो यू नो व्हाट यूनियन डज ड्यूरिंग COVID-19. सो दे हैव implemented disaster management act. Once there is a disaster management act, everything went to central government के पास पावर. फिर हेल्थ की कोई पूछती ही नहीं है. सो डिजास्टर मैनेजमेंट इज अंडर होम मिनिस्ट्री. ये याद रखना. डिजास्टर मैनेजमेंट इज अंडर होम मिनिस्ट्री एंड इट इज इन यूनियन लिस्ट. देखो आपको पता होगा एनडीए में. सो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, डीएम एक्ट 2005. सो यहाँ पर एक है एनडीए में जिसका हेड है पीएम. देन एसडीएम है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. एसडीएम है उसका हेड जो है सीएम है. देन नेक्स्ट इज डीडीएम है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. उसका हेड है डीएम. सो बट despite it is heading DM, but it is under home ministry. Remember this. चलो आगे बढ़ते हैं. So next is competitive relation. So competitive means there is a healthy competition. For example, there is a ranking. If there is a international ranking, I think आपको पता होगा. जैसे फाइनेंस कमीशन recommend क्या करते हैं कि state they have performed better in fiscal performance. If you have better fiscal performance, will give let's say 5% grant. So that means every state will start competing to perform well. Na? If there is a performance-based incentive, for example, the Finance Commission suggested that if the state government they are performing good in welfare scheme, if they are having good spending in the infrastructure, then we'll provide more funding. So in that case, it create a competition. I think आपको और एक चीज पता होगा. हर एक state government आजकल क्या बोल रहे हैं? 5 billion economy we are going to create. 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वी आर गोइंग टू क्रिएट. आपने सुने होंगे यूपी गवर्नमेंट भी बोल रहा है. हर एक गवर्नमेंट बोल रहा है कि 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन. एंड ईच एंड एवरी गवर्नमेंट दे आर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एफडीआई ऑल ओवर द वर्ल्ड. दे आर ट्रैवलिंग टू द ऑल ओवर वर्ल्ड. आई थिंक आपको पता होगा. दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलेशन ना. Healthy competition among the state to attract investment, improving governance and secure better ranking like Niti Aayog's SDG index, ease of doing business. आपको पता होगा बहुत सारे मॉडल हम बोलते हैं. गुजरात मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल. That is a classic example of and state government they are taking pride on that. That is a Delhi model, Gujarat model. I think आपको पता होगा South India model. So these are classic example of developmental model. Even bulldozer model भी आप बोल सकते हो. So गुजरात जोक से पार्ट मत लिख देना बुलडोजर मॉडल. ठीक है. सो गुजरात एंड तमिलनाडु कॉम्पिटिंग इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ. केरला एंड हिमाचल प्रदेश in human development indicator. These are classic example of what competitive relationship. ठीक है. So next एक क्वेश्चन आती है कि why we should study and maintain good relation among the neighbors. So आप समझो you will not have peace unless the place you are living is. एक अच्छा quote है ना. So injustice anywhere threats to justice everywhere. आपने सुने ना. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. So same type आप समझ सकते हो. If you are living in a surrounding area where no one is happy, you will not have good happy relationship. So that is the reason we need to have good relation with our neighbor also. So you can see what are the benefit of maintaining harmonious relationship or importance of maintaining harmonious relationship. यहाँ से that can be modified in an examination. So it can ask maintaining good interstate relation is essential for development of India. So in this light of above statement, discuss these steps that can be taken to improve relationship. Then you have to talk about all these things. Now, first part of the answer, you have to talk about all these things. So why it is essential to maintain good relationship between different states. So first one is what? So maintaining and cordial relation among the state is critical for India's unity, integrity. Key reason includes national integration, so prevent fragmentation and promote national harmony. So efficient governance enable effective implementation of national policies. Agar if there is distrust, there is a conflict violence, so we might not implement. For example, if there is a LPG cylinder is moving but one state is blocking that, so we cannot do that. For example, if there is a river is flowing from upper riparian to a lower riparian, but upper riparian they are blocking it and not letting the water. So agriculture policy, law, whatever may be policy rules, it is not going to implement it in the lower area. Na?
So next is economic development. Just imagine अगर मान लो एक स्टेट दूसरी स्टेट को अटैक करता है उनका लोग को, जैसे तमिलनाडु में हुआ था एक आई थिंक इंसिडेंट की जो बिहार के लोग भाग रहे थे, तो आपको लगता है कि आप कोई आके वहां काम कर पाएंगे? दे विल नॉट वर्क देयर. सो फैसिलिटेट द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड सर्विस एंड लेबर. सो देखो फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर इज वेरी एसेंशियल. इफ यू स्टार्ट अटैकिंग and you can say what is that, if you start attacking and targeting some section of the society, then your economy will not grow. So we need to have good relation. So next is law and order. So ensure that seamless policies and internal security across the border. For example, मैं आपको एक अच्छा चीज बताता हूँ. मान लो ये है आंध्र प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, ये है उड़ीसा. तो यहाँ पर नक्सल है. नक्सल को जैसे ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने दे ट्राई टू कैप्चर और एनकाउंटर, so they move to the Odisha. And whenever Odisha government chases them, they travel to the Andhra Pradesh, and after that they travel to the Chhattisgarh. If there is no coordination, so they'll keep on moving on the tri junction, and no state government will able to catch that. But in case of coordination, three side they can attack. They can jointly attack three side, and in the center they can nab them all this Naxals. Na? So that is the reason we can say it is very essential to maintain law and order also. For example, let's say one state criminal element may take shelter in another state also, na? So during crisis management, for example, COVID-19, आप imagine करो, whenever there is a crisis, like forget about COVID-19, let's say there is a cyclone is there, let's say a cyclone is impacting these many only states, but there are states these are not impacted na. So we can pick some human resource from here na. And if losses is here, so if some amount of money, some amount of donation can be given by the state, so we can able to overcome this crisis na. So we can say crisis management, promote collaborative action during pandemic, national disaster. And आपको पता होगा जिस समय हमें तमिलनाडु एंड कनाडा में फ्लडिंग हुआ था, दिस इज वेरी गुड थिंग दैट इवन नॉर्दर्न पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इंडियन पीपल, दे हैव डोनेटेड लिबरली. दैट इज व्हाट वी कैन से क्राइसिस वी नीड टू स्टैंड टुगेदर. चाहे कुछ भी आपका आइडियोलॉजी हो, चाहे वो कोई का रीजन हो, वी नीड टू गिव. जस्ट इमेजिन वी आर हैविंग 140 करोड़. आपने 10 रुपए दे दो दिन का, कितना बन गया? दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इज एनफ फॉर डीलिंग विद एनी क्राइसिस. अगर 100 रुपए भी हम सबसे निकाल लिए तो कितना हो जाएगा? और एक जीरो, 14,000 करोड़. दिस इज ह्यूज अमाउंट. ठीक है. सो नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. सो प्रिवेंट द एस्केलेशन ऑफ इंटरस्टेट डिस्प्यूट इनटू प्रोलॉन्ग लीगल एंड पॉलिटिकल बैटल. सो इफ देयर इज अ गुड रिलेशनशिप, आई थिंक आपको पता होगा, देन वी कैन एमिकेबली सेटल द डिस्प्यूट. ना जैसे बेलेगांव का किस किस के बीच में चल रहा है? ये महाराष्ट्र एंड कर्नाटक के बीच में झगड़ा चल रहा है. सो इट्स फेस्टरिंग, इट टेकिंग लॉन्ग ना, तो बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एंड वन मोर थिंग, प्लीज आप थोड़ा पढ़ लो दो टेरिटोरियल डिस्प्यूट कौन सा, यू कैन जस्ट गूगल इट. दिखा देता हूँ. ऑल इंटरस्टेट टेरिटोरियल डिस्प्यूट. यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. सो बेलेगांव और बेलेगावी, ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना उसको. आई थिंक एक बार नोट डाउन कर लीजिए चीजों को. सो फर्स्ट वन इज अबाउट बेलगांव और बेलगावी बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक. थोड़े से पढ़ लेना, थोड़े से, मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू शुड गो डिटेल एंड गो इन डेप्थ, नहीं तो मैं ऐड कर दूंगा, मुझे एक बार रिमाइंड कर देना. नॉर्थ ईस्टर्न रिसेंटली आसाम एंड इट्स नेबर के साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, जैसे आसाम, नागालैंड. आसाम के साथ सबकी है झगड़ा, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि आसाम से सब बने हैं ना. आसाम इससे पहले एक सेंट्रल था, उससे बने तो झगड़ा तो होगा ना. तो हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, देन हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, देन माइनर बॉर्डर डिस्प्यूट, ऑल दिस थिंग्स मैं एक बार बना लूंगा, एक सिंगल पेज बना के आपको दे दूंगा, नहीं तो मैं ये डॉक में ऐड कर दूंगा क्लास के बाद, डोंट वरी. मैं यही बोल रहा हूँ कि वेन एवर यू आर राइटिंग देयर आर टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट, सो यू हैव टू मेंशन ऑल दिस. बेलगांव इशू, यू कैन डिस्प्यूट between state, like in Odisha there is a Kotia village. So let's say whichever state you belongs, you should know about what are the dispute with your neighboring. For example, if you are from Bihar, you should know any territorial dispute with let's say with UP or any other state, you should know about it. Okay, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब जानोगे तभी तो आप एग्जाम्पल लिख पाओगे ना. चलिए, क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट नहीं है? ठीक है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. So first we have discussed why it is essential, what is the essence of maintaining good interstate relation. So next we are going to see about the institutions. So there are so many institutions we have established to improve the interstate relationship. So first one is about the Interstate Council under Article 263. So it's a constitutional body. जब भी आपको पूछेगा it's a constitutional body, yes it's a constitutional body. So promote coordination between center and state among the states.
सो चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर उसका मेंबर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द PM. So first established 1990 based on the Sarkaria Commission recommendation. Or one more thing, remember, so no, this interstate council, they have the original jurisdiction to listen, discuss the matter of interstate dispute. Same power with the Supreme Court ना. Supreme Court के पास एक power है under Article 131, इसको बोलते हैं हम original jurisdiction. So in case of any interstate dispute, any state and central dispute, you can directly go to the here. Same thing, you can go here and discuss. But it is not that, you know, its suggestion is not binding, but its suggestion is binding. जस्ट इमेजिन करो, आप अगर किसी का, दिस इज ए फॉरम फॉर सेटलमेंट ऑफ योर डिस्प्यूट एमिकेबली, पीसफुली, बट दिस इज फॉरम फॉर सेटलमेंट ऑफ ए डिस्प्यूट लीगली. समझ पा रहे हो? जैसे आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किसके साथ हो गया, तो आपके पास दो तरीका है, दोनों बैठ लो, डिस्प्यूट सेटल कर लो और एग्रीमेंट करवा लो, खत्म. सेकंड तरीका होता है कोर्ट में जाओ, 10 साल तक घिसे रहो, एट द एंड में कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा ना आप सेटिस्फाई हो ना ओपोनेंट भी सेटिस्फाई है. सो दैट इज द रीजन वी कैन से इंटरस्टेट काउंसिल इज ए गुड फॉरम ऑफ debate, discussion and amicably settlement of all the federal dispute. It can be center state or between the states also ना. So function क्या करता है? What kind of function performed by the interstate council? So investigate and discuss of subject of common interest between center state or state. For example, if there is a drought, if there is a, let's say there is a COVID-19 or crisis, so how they are going to deal with. Let's say there is a fuel crisis rising, so what kind of measure we can take to protect. So all these things we can discuss. So make recommendations on the intergovernmental relation. It can give recommendation, advice on the dispute resolution. ये दे सकते हैं सब चीजें, but this power is you can say same as Supreme Court under Article 131. 131 basically talks about original jurisdiction. So that means whenever there is a federal dispute, you can directly go to the Supreme Court, not by the way of appeal. So next we have seen about the zonal council. So currently India is having 5 or 6 zonal council. 6 zonal council, but initially it is 5. So all are established under the State Reorganization Act. हमेशा remember करो 1956. So 5 they have established under State Reorganization Act. मैं आपको इतना मुझे बताओ, मैं आपको कोई भी टॉपिक्स को 4-5 बार यहाँ पढ़ाते पढ़ाते आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, नहीं करवा रहा हूँ, इतना मुझे बस बता दो. तो कोई इंसान अगर ना भी पढ़ा रहा है ना भी पढ़ रहा है, थोड़े भी मौका उसको मिल रहा है, थोड़े से भी पढ़ेगा ना, मैं ये तो आपको गारंटी दूंगा 30-35 क्वेश्चन हमारा यहीं से आएगी प्रीलिम्स में. और मेंस में मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि चाहे कुछ भी क्वेश्चन आए आप बड़े अच्छा लिख लोगे. बट थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे ना, आप पक्का ये 100% आपका सीट कंफर्म कर लोगे. तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, थोड़े से मेहनत डालो. ताकि देखो ये आई थिंक 6 बार मैंने बोल चुका हूँ आपको, मतलब सोच समझो. फिर आगे भी पीटी आएगी, प्रीलिम्स के टाइम पे भी रिवीजन करेंगे और भी 5-6 बार बोलूंगा. कोई लगता है कोई इंसान अगर एक्टिवली लिसन कर रहा है कभी भूलेगा चीजों को. अगर वो भूल रहा है फिर तो उसको बलंडर कर रहा है, वो भारी मिस्टेक कर रहा है वो ना, उसको हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तो प्लीज इस सब चीजों को बड़े ध्यान रखना. सो नेक्स्ट इज प्रमोट इंटरस्टेट कोऑपरेशन इन 5 जोन. दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. आप ऐसे देखो कैसे याद रख सकते हो. देखो लाइक दैट माइंड में ऐसे मैपिंग क्रिएट कर सकते हो. ऐसे एक है, सेंटर में भी एक है, देन यहाँ भी एक है काउंसिल ना नॉर्थ ईस्ट में. 6 हो गया. बट नॉर्थ ईस्ट काउंसिल इज एस्टैब्लिश अंडर द नॉर्थ ईस्ट एक्ट. सो प्रमोट इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. So one more thing we have established, but now it is you can say it's not functional. So it is called National Development Council. So I think आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन, जिसको हम PC बोलते हैं. प्लानिंग कमीशन they actually prepare the planned economy for 5 years. Once they have prepared, so it is the NDC, National Development Council. They approve the plan. ठीक है, but with the dismantling of the planning commission and establishment of Niti Aayog, so this is became non-functional. So it's a non-constitutional body formed by the executive resolution, just like the planning commission in 1952. So it includes the chief minister, union cabinet minister, as well as the prime minister also. Focus on the planning, development, coordination. Its role has diminished post Niti Aayog. It remains relevant for national consultation. ठीक है, तो its role is irrelevant. So now we can revive it. We can make it also a forum for debate, discussion to for all this federal issue ना. ठीक है, सो फार एवरीथिंग इज ओके. आगे बढ़े. सर ये एनडीसी और नीति आयोग का कनेक्शन फिर से जरा बता दीजिए. क्या क्या एनडीसी और नीति आयोग, ये सर ये कनेक्शन फिर से जरा बता दीजिए. ओके बाबा. देखो इससे पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन था.
What is the role and responsibility of the planning commission? They prepare 5-year plans ना. ये 5-year plan बनाने के बाद that plan need to be approved by someone. So it is the NDC they approve. And NDC के अंदर कौन होते हैं? PM होते हैं, CM होते हैं, कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं. Just imagine करो, ये तो बड़े powerful body, it's a high power body, so it actually approve the plan, and on that basis state government they have prepared their state planning. So with dismantle of the planning commission we have changed replaced that with नीति आयोग. कब replace किए थे? 1950 से। हाँ, नीति आयोग 1950 से आ गया. कब? 2015. 14. So after we have replaced the planning commission with Niti Aayog, so there is no such planning. So if there is no planning, who is going to be approve it? तो इसीलिए इसका काम ही खत्म हो गया ना. प्लान ही नहीं तो अप्रूव क्यों करेंगे? तो that is the reason its relevance is declining. Okay, स्वाति? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. So next is key issue in the interstate relation. So despite the constitutional safeguard, interstate relation in India face several challenges. So क्या क्या challenges अभी हमें face करते हैं? यहाँ से question आ सकता है. There are a lot of challenges, or you can say discuss the challenges that we are facing in our interstate relation. So आपको पूछ सकता है, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, it is not the center state relation, it is not only the center state relation, also the interstate relation are equally important in our federal setup. अगर if there is a question, it is the interstate relationships are equally important for good governance or development of India as such. So you have to discuss about why it is important. First we have discussed here ना, कहाँ डिस्कस किए थे, थोड़े आगे डिस्कस किए थे ना, क्या क्या इंपॉर्टेंस है ना. देखो क्वेश्चन कुछ भी आए आंसर वही रहेगा. एंड देन इन सेकेंड पार्ट यू हैव टू डिस्कस अबाउट क्या क्या डिस्प्यूट में, कॉन्फ्लिक्ट में क्या क्या चीजें आ रहा है, यू हैव टू डिस्कस दैट. सो फर्स्ट वन इज अबाउट दी रिवर वाटर डिस्प्यूट ना. सो आई थिंक लॉट ऑफ one of the contentious issue, for example Kaveri dispute between Tamil Nadu and Karnataka, Krishna dispute between Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Rabi bias between Punjab and Haryana. So कुछ ये मैं दे दिया आपको रिवर डिस्प्यूट. कभी कभार पास्ट एग्जाम में आपको पूछा है कि सीक्वेंस में अरेंज करो, या तो पूछ सकता है कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. तो ये स्टेट्स को आपको याद रखना पड़ेगा. एंड डेट्स, they can ask about the chronology also. Arrange these dispute from chronological order. Chronology मतलब starting से लेके ending तक. Okay, so Godavari dispute you have to remember the states. Then Narmada dispute you have to remember the states. Then date you have to remember also. And which river, नाम से तो है river, जरूरत ही नहीं है. रवि बियास, so you have to remember 3 states. तो आपको नहीं लगता कि राजस्थान कभी होने वाला, लेकिन होगा. प्लीज इसको रिमेंबर करो. आपको लगेगा कि मैं क्यों रिमेंबर करूंगा, मैं भी बोला ना, अभी अगर आप एफर्ट डाल दोगे, याद रख लोगे ना. देखो जनवरी के टाइम में हम जब रिवाइज करेंगे, जब दूसरी लोग स्ट्रगल करते होंगे, आप लोग एंजॉय करोगे. मैं इसलिए बोल रहा हूँ, डोंट वेट फॉर दैट एंड. अभी के अभी मेहनत कर लो. उस समय जब वो लोग पूरा एकदम उनका पसीना छूटेगा, रात को नींद नहीं आएगी, पढ़ नहीं पाएंगे. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हर दिन अभी 10-10 मैसेज आ रहा है मेरे पास, सर मैं अटेम्प्ट दूं या अटेम्प्ट छोड़ दूं. और मेरे को इतना मतलब डिलेमा में पड़ जाता हूँ, मैं क्या बोलूं ऐसे बच्चे को, छोड़ू या दूं, मुझे कैसे पता चलेगा. बात समझ रहे हो ना. सो बिफोर दैट आई शुड नो अबाउट योर कंडीशन. इसीलिए ये सब होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ते नहीं है और लास्ट मोमेंट में उनको लगता है कि 3 महीने में हम सब पढ़ लेंगे. वही दिक्कत होती है. तो प्लीज अभी से पढ़ना शुरू करो. कावेरी, तो यू हैव टू रिमेम्बर. देखो ये आपको नहीं लगा था ना पुदुचेरी आएगी, बट हियर इज पुदुचेरी. सो कृष्णा टू बंशधरा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश. Mahadahi, Goa, Karnataka, Maharashtra, and Mahanadi, Odisha, Chhattisgarh. So you have to remember all these dates also. So I think if there is a dispute in the, let's say there is a dispute in the newspaper, please आप लोग थोड़ा सा वो पेपर को पढ़ते रहना. बाबा वो टाइम नहीं मिल रहा तो इन्फोग्राफिक्स को रेफर कर लो, बट पेपर को पढ़ो. मैं क्यों बता रहा हूँ, यू विल वट एवर. देखो स्टैटिक आई लेट यू क्लियर योर स्टैटिक. एंड मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, जैसे थोड़ा टाइम मिलेगा मैं यूट्यूब में भी करंट अफेयर का थोड़े बहुत एनालिसिस करने का प्लान कर रहा हूँ. मैं भी हिंदू एनालिसिस में करना शुरू करूंगा, मे बी इन मॉर्निंग, इफ परमिट, टाइम परमिट. मैं भी मतलब पीटी के बाद में करूंगा, तो उसको आप देख सकते हो. करंट अफेयर अगर आप एनालिसिस करते हो प्लस ये स्टैटिक पढ़ लेते हो ना, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि दिस इज व्हाट स्टैटिक, योर कोर, योर बेस इज वेरी स्ट्रांग, योर बेस इज वेरी स्ट्रांग, एंड दिस इज व्हाट योर करंट अफेयर यू नीड टू ऐड, देन ओनली योर पिरामिड इज कंप्लीट. प्लीज देखो अभी क्या होता है ना, बच्चे ऐसे मुंह उठा के आ जाते हैं, बोलते हैं कि हमें करंट पढ़ के समझ जाएंगे. नो, करंट इज ओनली अबाउट 10 to 20%. Rest 80% is about the static. If you don't know about the static,
you don't have clarity of your static, you will not able to understand this current affair as well. So that is what मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान रखो करंट पे, आप स्टैटिक पे अपने आप करंट अफेयर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन इज अबाउट द बाउंड्री डिस्प्यूट। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट अबाउट द बाउंड्री बिटवीन आसाम, नागालैंड, आसाम, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक ओवर बेलगावी ना, ये लिखा भी हुआ है ना। लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट आई थिंक आपको पता होगा। सो सेंटर वर्सेस लॉट ऑफ स्टेट्स, दे आर दे आर for example oppositions to the south Indian states, they are opposing the imposition of Hindi language ना, उसको बोलते हैं सुप्रा स्टेट नेशनलिज्म। आपको पता होगा अगर आप देखोगे तो ये जो स्टेट्स है ये नॉन हिंदी स्पीकिंग, सो दे आर अपोजिंग। एंड नेक्स्ट इज लेड टू द कल्चर एंड पॉलिटिकल ब्लैक स्लैश। सो डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, सो दे आर हेवीली developed state and they are saying that we are contributing significant taxations to the union government, but union government is giving more money to the UP and Bihar and in return we are not getting। समझ पा रहे हो? That is what they are concerned, feel a burden of contributing more and receiving less। poor state like Bihar, UP demand more assistance, special category status का demand करते हैं, and South India state they oppose it। so I think जैसे आप भी बोल सकते हो GST आने के बाद there is a opposition also, some state are losing, some state are gaining। So interstate armed classes, so law enforcement action across the state lead to the violence। For example अभी recently हुआ था Assam with Meghalaya, so their police are classes at the border led to severe some of the Assam police and Meghalaya police officers died in this incident also। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। बाबा मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया इशू, यहाँ देखो एक तो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है, कुछ एग्जाम्पल दे देना, 1 2 3 4 5 और भी पॉइंट्स आप ढूंढ सकते हो। सो दीज आर द इंटरस्टेट डिस्प्यूट, इंटरस्टेट रिवर नॉट रिवर, इंटरस्टेट डिस्प्यूट और इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट among the different states। okay, so if there is a conflict, so we need certain mechanism to resolve that। so what are the mechanism? First one is interstate council, second one is regional council, then third one is NDC which is not in function, so we can revive it, fourth you can say Supreme Court also na, then fifth there is a constitutional mechanism under Article 262, they basically talks about adjudication of interstate river water dispute। so देखो this is what article said, that we need to adjudicate interstate river water dispute। for that parliament can make law, and whatever whatever the parliament make law, so that appeal is not lies with the Supreme Court or any other court, that is what said by the Article 262। but to implement, how you are going to establish, how you are going to resolve the conflict, we have enacted interstate river water dispute act 1956। प्लीज जब भी आप लिखते हो ना इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ऑलवेज राइट द डेट। देखो जस्ट इमेजिन करो, मैंने आपको बताया ना, आपका आंसर क्यों अलग दिखना चाहिए, आपका आंसर इसीलिए अलग दिखना चाहिए कि आप डेट भी लिख रहे हो 1956। आप समझो आपका मार्क्स को कोई काट ही नहीं सकता, और उसमें जो मार्क्स आएगी ना, आप सच में आपको लगता होगा कि मैं छोटे छोटे एफर्ट देके मुझे क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, जब मार्क्स में दूसरी को मिलेगा कितना 4.5 मिलने के टाइम पे आपको मिलता है 5, एक 0.5 मार्क्स भी बढ़ती है ना, तो 10 मार्क्स बढ़ती है एक पेपर में, 40 मार्क्स बढ़ गया, ऐसे में 10 बढ़ा लो 50 बढ़ गया। 50 मार्क्स मतलब या तो आप रैंक से आउट हो या तो पूरा एकदम रैंक का टॉप रैंक आ जाएगा। 50 मार्क्स बहुत होती है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा होती है 50 मार्क्स। तो प्लीज ये छोटे छोटे चीजों पे ध्यान रखो ना। सो नेक्स्ट रेकमेंडेड, तो अगर आपको पूछा गया व्हाट आर द मैकेनिज्म दैट इज अवेलेबल फॉर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, बताओ क्या बोलोगे? नॉट रिवर वाटर, इंटरस्टेट डिस्प्यूट। आई थिंक आप लोग मुझे पूछते थे ना कि कैसे हम स्ट्रक्चर करें आंसर को। देखो मैंने तुम्हारे सामने सब स्कैटर्ड होके था, पढ़ने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग इट यू हैव टू बी अरेंज दैट ना प्रॉपर्ली ना। सो वी कैन से दैट फर्स्ट व्हाट वी कैन डू, इंटर स्टेट काउंसिल 263 ना, द नेक्स्ट इज interstate river water dispute under Article 262, and for implementation we have Interstate River Water Dispute Act 1956। Anything? बताओ बताओ और क्या है? Need to revive। Then we can say regional council na? Then at the end if nothing is happened then Supreme Court। ठीक है, मैंने आप देखो कितना इजीली आपके लिए समराइज कर दिया। अगर सोचो आपने नोट्स ऐसे बनाया और एग्जाम से एक दिन पहले एंटायर पॉलिटी को पढ़ सकते हो ना, वही चीज आप नहीं कर रहे हो, आप बस पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो। प्लीज ये सब चीजों को ध्यान रखो।
देखो ये सब चीजें हमेशा नहीं आती है, किस किस दिन बड़े मन करता है मैं बहुत सारी चीजें बोल देता हूँ, सो ये सब चीजों को ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आर दी रिकमेंडेशन दैट इज गिवन बाय डिफरेंट डिफरेंट कमीशन सो रिगार्डिंग इंटरस्टेट रिलेशन। सो फर्स्ट वन इज अबाउट द सरकारिया कमीशन, सो स्ट्रेंथनिंग इंटरस्टेट काउंसिल, prior consultation with the state for legislation in the concurrent list. So whenever you are making any law on the concurrent list, you need to consult state government, because state government anyway they are paying the 40%, so centrally sponsored scheme 60-40. So next is cop the misuse of Article 356 and balance the balance use of all India service. Then Punchi Commission also talk about advocate for cooperative federalism, suggested code of conduct for center-state relationship. Then propose changes to the role of governor, recommended setting of interstate. ये चीज आप सजेस्ट कर सकते हो। Interstate Trade and Commerce Commission. We have not yet implemented Interstate Trade and Commerce Commission. ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल में आएगी Interstate Trade and Commerce Commission? Anyone? आर्टिकल आर्टिकल कौन सा आर्टिकल? सर It will come under, हाँ 260 सॉरी सर 263 सर 263 is interstate council. Interstate Trade Commerce Commission. We have not yet established. If we are going to establish under which article? सर सर 301 से 307 Yes, Article 301. ठीक है, so Article 301 ये remember करना। Article 301 basically talks about providing interstate trade commerce. ठीक है, चलिए तो then next is way forward. So what are the solution? I think विजय लक्ष्मी आपको समझ में आ गया होगा, आपने बोले थे ना किसे समराइज कैसे करते हैं। डोंट वरी, हम पूरा 1 साल तक है, कभी कभार ऐसे ऐसे चीजें आएगी मैं आपको बता दूंगा, थोड़े पेशेंस रखो, सब आपको सीख जाओगे। ये देखो समराइज कर देना पूरा, देखो पूरा कितने बड़े पॉइंट्स को ना ऐसे ऐसे आप याद करके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, सो हाँ, so next is strengthening of the federal institution, like making interstate council and zonal council more proactive, like let's say twice thrice or 4 times in a year हम meet कर सकते हैं, ताकि interaction, देखो बोलते हैं ना, the more you interact there will be less you can say distrust, जितना आप इंटरेक्शन नहीं करोगे ट्रस्ट कम होती है। सो रिफॉर्म द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, लाइक setting up speedy tribunals. For example, in case of interstate river water dispute, we can establish a tribunal. They can debate, discuss and settle the river dispute na. So next is empower a neutral agency to mediate and resolve. For example, we can use some neutral arbitrator in case of dispute between the state or center state. So enhance transparency and dialogue, promote regular center state and interstate summit, institutionalize the collaboration decision making. बैलेंस रिसोर्स एलोकेशन, हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंस कमीशन को फॉर्मूला को, सो दैट बोथ पॉपुलेशन एंड परफॉर्मेंस कैन बी एनकरेज, सो दैट साउथ स्टेट विल नॉट फील लेफ्ट आउट एंड नॉर्थ स्टेट विल नॉट फील दैट देयर कंसर्न इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज, जैसे आपने था ना एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, वी कैन डू सम लॉट ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो तमिल से साथ कुछ, जैसे था यार कुछ था, रुको, तमिल गंगा कुछ कल्चर था, ऐसे हम कुछ कल्चरली एक्सचेंज कर सकते हैं, रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, वी कैन डू लॉट ऑफ कोलैबोरेशन आल्सो। सो इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स डाइवर्सिटी एंड मेंटेनिंग हार्मोनियस सेंटर स्टेट रिलेशन इज क्रूशियल फॉर ensuring cooperative federalism. The need of the hour is not just the constitutional compliance but also political maturity. So our politicians need to be very much mature, and administrative coordination and mutual respect among the state to uphold federal spirit envisaged by the constitution. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक चैप्टर पढ़ लेते हैं आज। आई थिंक थोड़ा सा हमें फास्ट करना पड़ेगा, वी आर मूविंग लिटिल बिट ऑफ स्लो। ठीक है, सो फॉर एवरीथिंग इज ओके? Yes, sir. यस सर चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज अबाउट द प्रेसिडेंट। सो अभी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर अबाउट द प्रेसिडेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन स्टेट एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये चीज याद रखना। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे डिस्ट्रिक्ट में डीएम होते हैं, डीएम इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को एस्टैब्लिश करता है? आर्टिकल 52, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, बावन 52 इज टॉक अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ही सी एक्ट एज ए नॉमिनल, देखो अब जब आप ही सी लिखते हो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, जब आप लिखते हो ना ही सी,
So nominal executive, real power exercised by the council of minister headed by the prime minister. कौन सा आर्टिकल ये talks about? आर्टिकल 74 इज टॉक्स अबाउट, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड हमारा जो स्पीड है बहुत रैपिड जाएगा, क्योंकि अभी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी आपके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, हम बहुत स्पीड में जाएंगे, तो प्लीज आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा अभी जोर से ना. द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सो ही इज द सुप्रीम कमांडर. सो तीनों, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों आते हैं. तो उनका जो हेड होते हैं, मतलब हेड का हेड समझ रहा, चीफ कमांडर. सो एज पर आर्टिकल 53, सो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन आर बेस्ट इन द प्रेसिडेंट एंड एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी हम एक्शन लेते हैं आपको पता होगा, सो लाइक यू नो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम द इमरजेंसी, बट वो नहीं करते हैं, बट प्रेसिडेंट के नाम पे हम लेते हैं. ओके. So B.R. Ambedkar, the president occupies same position as the king under the British Constitution. So B.R. Ambedkar ने बहुत clear, loud and clear कर दिए थे. Our president is not that powerful like the US president. Our president is almost having similar power, similar position as the president, or you can say king in the British. He is the head of the state, but also not the. He is the head of the state, but not the head of the government or head of the executive. Only ceremonial position, or you can say rubber stamp. The election of the president deals with by the 54 to 55. So I think you know he is elected, not nominated by electoral. He is elected, not nominated. And how the election is happened? By electoral college. कौन कौन electoral college में होते हैं उस पर भी बड़े ध्यान से रखना. इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. सो बोथ आपका इलेक्टेड मेंबर होना पड़ेगा पार्लियामेंट का, ठीक है, बोथ एमपी आपको होना पड़ेगा. देन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड यूटी. यूटी में कौन आते हैं? दो ही आते हैं, दिल्ली एंड पुदुचेरी, बाकी कोई नहीं आता है, ये चीजें ध्यान रखना. तो दिल्ली एंड पुदुचेरी आते हैं, ये पूछ सकता है, यहाँ आपको स्टेट हो सकता है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ऑल स्टेट्स एंड ऑल यूनियन टेरिटरी. ठीक है, तो आई थिंक अभी अभी जम्मू कश्मीर भी अभी आ जाएगा, क्योंकि उनके पास भी तो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना. ठीक है, एक बार उसको देखना पड़ेगा, मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में क्या होगा. ठीक है, सो नॉमिनेटेड मेंबर एंड एमएलसी आर एक्सक्लूडेड ना. सो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड एमएलसीज. जैसे आप एमएलसी कौन होते हैं? जैसे आपका स्टेट में दो होते हैं हाउस को, भी कवर कोई कोई स्टेट में दो हाउस है, जिसको बोलते हैं असेंबली एंड काउंसिल बोलते हैं. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो उसका जो मेंबर है वो वोट नहीं दे पाएंगे, और नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं दे पाएंगे. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. So voting system, what kind of voting system we follow? Proportional representation by a single transferable vote. So proportional representation हम देते हैं. So voting is by secret ballot. So you have to remember that. So that means whatever vote you are giving, you should not show to anyone. So it's secret ballot. So value of vote is calculated to maintain parity between the center and states. So how it is? So vote of an MLA कैसे हम count करते हैं? Total population of the states. ये हम कौन सा सेंसस लेते हैं? 1971. You have to remember. So population of the state divided by total elected MLA in the states into 1000. So that is what the vote of one MLA. एक MLA का वोट क्या है? Then ठीक है, तो देन आई थिंक वो इतना कॉम्प्लेक्स मत जाना. सो आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ भी वैल्यू भी दिया हुआ है, तो यू कैन सी हाउ दे आर काउंटिंग. देन टोटल वोट ऑफ एमएलए इक्वल्स टू टोटल वोट ऑफ एमपी. ठीक है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई, लेट्स से द वोट ऑफ एमएलए टोटल वोट ऑफ एमपी. क्या होगा? टोटल वोट ऑफ एमपी इक्वल्स टू टोटल वोट ऑफ एमएलए ना. You have to count the vote of each and every MLA. So how you are going to count? पॉपुलेशन कितना है उस स्टेट में? मान लो यूपी का पॉपुलेशन 30 करोड़ है. देन कितना इलेक्टेड? मान लो इलेक्टेड 500 है. 1000 करोगे, जो वैल्यू आएगी वही आपका हो गया वोट ऑफ एन एमएलए. एंड ऐसे करके यूपी में हर एक एमएलए का वोट ऐड करो, देन एमपी का ऐड करो, देन हर एक स्टेट का एमएलए का वोट को ऐड करो, एंड टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू दी vote of all vote of MP. आप यहाँ देख सकते हो, the here we are balancing the union power with the state power, almost 50-50. Power of MP is equals to power of MLA. Why? Because the president is not the president of the political party or president of the union. He is the president of state, or you can say both state and union. So that is the reason we are balancing the power of MLA equals to power of MP.
देन वोट ऑफ एन एमपी क्या कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ एन एमपी वोट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री. सो एमपी का वोट क्या होगा? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलए बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज. जितना हमारे पास इलेक्टेड एमपीज होते हैं हम डिवाइड कर लेंगे, तो इससे हमें एमपी का वोट मिल जाएगा. सो प्रेसिडेंट इलेक्शन टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए कितना आया था? You can see 5 lakh and total number of elected MPs कितना थे? 776. So value of each MP is 700. So this change slightly if number of elected MP may changes. ठीक है. आई थिंक थोड़ा सा और तो इलेक्शन को ऐड होना चाहिए था ना. कोई नहीं, मैं आपको थोड़े से इसके बारे में थोड़ा सा और भी एक दो स्टेप्स है, मैं शायद आज बना नहीं पाया, मैं कल आपको बना के इसको अच्छे से समझा दूंगा. ठीक है, बस इसको हम बाद में समझा देंगे, क्योंकि दिस कैन बी ए वेरी गुड क्वेश्चन. मैं आपको और दो स्टेप्स है शायद यहाँ एडेड नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा. इसको बस थोड़ा सा रहने दो, मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आज जो टाइम है उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं. द नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन. सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट? So to contest an election, a person must be citizen of India and 35 year or elder, be eligible to elected to the लोक सभा. लोक सभा देखो ये कहाँ किसके लिए एलिजिबल होना चाहिए? लोकसभा के लिए. और वाइस प्रेसिडेंट किसके लिए एलिजिबल होना चाहिए? If it is vice president, then in case it is Rajya Sabha. So this comparison is very very important. So not hold any office of profit under the government except exception sitting president, vice president, governor or minister. ठीक है. So you should not hold any office of profit. Okay. So these are the four criteria for eligibility, you can say. So you have to remember Indian citizen होना चाहिए, then 35 year होना चाहिए. Next क्या होना चाहिए? Eligible to be elected to the Lok Sabha, not hold office of the profit under the government, but sitting president is not considered as office of profit, any vice president, governor or minister. So आप टर्म्स देख सकते हो. So terms and condition oath. So 5 year from date of entering office, can resign earlier but or can be removed by impeachment. So president can be removed or impeachment. ठीक है, by the impeachment also. So re-election, no limit on the number of election, but यूएसए में क्या है? 2 times हो सकता है. 2 into 4 year, so 8 year plus 2 year that can be from vice president to president also. Total president elect यूएसए में 10 year आप हो सकते हो. यूएसए में मैक्सिमम कोई प्रेसिडेंट हो सकता है फॉर 10 ईयर. तो यहाँ पर उनका जो 10 ईयर है 2 times into 4 year होता है. So oath is administered by the Chief Justice of India to uphold Constitution and serve people of India. So in case of Chief Justice is not there, any judges below the Chief Justice can administer the oath also. So condition क्या है? So must resign from the parliament or state legislature. अगर आप मान लो आपने इलेक्टेड हो गए then president, then you have to resign. So entitled to office resident Rashtrapati Bhavan, salary privilege, salary cannot be reduced during 10 years. So once you are appointed, your salary cannot be reduced. So vacancy in office, so vacancy हो सकता है if it is completion of 5 years. Second हो सकता है resignation दे दिए, death हो गए, impeachment, other disqualification or election being declared invalid by the Supreme Court. If there is election and there is a fraud manipulation, so it can be declared invalid also. So in case of vacancy, the vice president act as a president until new president is elected. ठीक है. So अगर वैकेंसी रहा तो वो हो सकता है. So what are the ground for impeachment? So impeachment is provided under article 61. प्लीज इसको रिमेंबर करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो बस आपको एग्जाम के लिए थोड़े बहुत रट लेना है, but 61 is very important. So impeachment procedure. So what are the ground for violation of the constitutions? And it is not defined in the constitution. So from here it can be asked a very good question. The ground for impeachment of president is mentioned in the constitution. So it can say that the president can be impeached on the ground of violation of the constitution and it is mentioned in the constitution. तो आपको लगेगा हाँ कहीं तो मैंने पढ़ा था. No, it is not defined. It is not defined properly. What do you mean by violation of the constitution? So it can be initiated by either of the parliament, either house of the parliament. That means it can be initiated by Lok Sabha or Rajya Sabha. Must be supported by 1/4 member. If it is Lok Sabha, 1/4 of it. If it is Rajya Sabha, 1/4 of it. Then 14 days notice is mandatory to the president. हमें 14 दिन का notice भी देना होता है. Then investigation and resolution must be passed by 2/3 majority in the both house.
So here it is 2/3 majority of the 2/3 of the house, not more than present voting नहीं है, 2/3 of the strength. ठीक है, 545 मान लो स्ट्रेंथ है, उसका 2/3 पास होना पड़ेगा. दिस इज द वेरी टॉपेस्ट मेजोरिटी वी नीड, यू हैव टू रिमेंबर दैट. So nominated member can participate in the impeachment, but a nominated member they have not involved in the election. Okay, state legislature have no role in this process. ठीक है, तो प्लीज ये थोड़ा सा इम्पीचमेंट प्रोसेस को आपको याद रखना पड़ेगा. व्हाट काइंड ऑफ मेजोरिटी, नो 1/4 ऑफ द मेंबर दे कैन इनिशिएटेड. सो यू हैव टू स्टडी इट प्रॉपरली थोड़ा अच्छे से पढ़ना है. So no president of India so ever been impeached in India. Same thing happened with the judges also. No judges is so far impeached in India. Okay. ठीक है, आगे बढ़े. कोई डाउट है आप लोग को? चलिए, तो पावर ऑफ द अगर आप प्रेसिडेंट का आपको देखोगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड एक्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन फ्रॉम 50 to 78. सो पावर के अंदर आएगी एग्जीक्यूटिव पावर. सो ऑल द डिसीजन ऑफ इंडिया यूनियन गवर्नमेंट आर टेकन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ओनली. So executive power of union vests with the president. So appointment made by the president, prime minister, other council. देखो, president appoint the prime minister and other minister appointed by the president on the recommendation of the prime minister. ठीक है. So Article 75, the governor of the state, he can appoint Attorney General of India, he can appoint Comptroller and Auditor General of India, he can appoint Chairman and member of UPSC State Finance Commission, Election Commission, Chief Justice, Judges of Supreme Court or High Court are appointed by the President. So this is what the executive power of the President. So आप इसको याद रख सकते हैं ये ना. Then administrative power, so makes law for a transaction of government business. So president can make rule for transaction of the government business, can declare any area as scheduled area under 5th schedule. So 5th schedule is applicable to all over the India except northeast. Northeast we use 6th schedule. ये चीजें clearly होना चाहिए. 5th schedule is applicable to all over the India except northeast. So legislative powers, like Article 85, 86, 87, 88, 128. So summoning means what? पार्लियामेंट अगर सेशन होना है, हम बोलेंगे कि पार्लियामेंट सेशन इज समन्ड, मतलब बुलाना है कि आओ सेशन बनाएंगे. देन प्रोरॉग, एट द एंड ऑफ द सेशन, इट्स प्रोरॉग मींस एंड ऑफ द सेशन, आप लोग घर जा सकते हो. देन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. सो द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. So address the parliament at commencement of the first session after each general election and each year. तो आपको पता होगा, बोलते हैं ना president speech, budget speech से पहले president speech होते हैं. So president gives speech each and every year, and after after election new government is formed, they also give the speech also. So president also appoint pro tem speaker and of the Lok Sabha. Pro tem speaker is actually in India we follow कन्वेंशन ऑफ अपॉइंटिंग एल्डेस्ट पर्सन. जो सबसे ज्यादा एज होते हैं तो उनको प्रोटेम स्पीकर की तरफ अपॉइंट करते हैं. सो बेसिक रोल ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज टू एंश्योर दैट इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड इलेक्शन ऑफ स्पीकर हो जाए, उसके बाद सब चीजें सेटल हो जाए. आफ्टर दैट द रोल ऑफ प्रोटेम स्पीकर एंड देयर. देखो, कोई नया जैसे आप देखें ना, टेम्पररी कोई स्पीकर बनता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर. सो बेसिकली इन इंडिया वी अपॉइंट फॉलो द फ्रेंच कन्वेंशन ऑफ अपॉइंटिंग एल्डेस्ट मेंबर एज द प्रोटेम स्पीकर. ओके. So he also nominated 12 members to the Rajya Sabha from field like literature. You have to remember that this word literature, science, art, and social service. This 4 LSAS. ठीक है, जो भी आप याद रखना, उसको कुछ निमोनिक्स, कुछ वर्ड बना दो. यू कैन रिमेंबर दैट आल्सो. देन 2 एंग्लो इंडियंस मेंबर टू द लोकसभा नाउ रिपील्ड बाय 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. उसको हमने रिप्लेस कर दिए. देयर इज नो एंग्लो इंडियंस इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ नाउ. कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन अंडर आर्टिकल 123. ये तो आप याद रख सकते हो हमेशा ना. ऑर्डिनेंस इज 123. Ordinance making power of president is under article 123. So decide on the qualification of MP in consultation with the election commission under article 103. You can say that article 103 deals with disqualification of the MPs. ठीक है. देखो, मुझे पता है आप लोग पे हैवी हो रहा होगा, बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स बम्बार्डमेंट कर रहा हूँ, बट अब भी हैवी नहीं लोगे तो कब लोगे? ठीक है, हमें अभी से पढ़ना है, अभी से अच्छा करना है. ठीक है.
So next is financial power. So Article 110, Article 112, and 280. So money bill can only be introduced in Parliament with President prior recommendation. Na? This is what one talks about 110. So the annual budget laid before the Parliament only after President approves. So this is what mentioned in the 112. Then Constitution of the Finance Commission under Article 280 every 5 years is also financial power of the President also. ठीक है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं जुडिशियली पावर. सो जुडिशियल पावर में लाइक 72, 124, 217, 143. ये तो आपको पता होगा, ये तो आपने हर दिन लव लेटर लिखते थे जो बच्चे थे. तो इसका मतलब क्या होता है 143, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा. सो अपॉइंट चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. ठीक है. कौन उनको अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. सो कैन सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143. अगर मान लो, इसको आप कैसे याद करोगे 143, आपने तो बहुत काम किए होंगे. अगर आपने कोई किसी को लेटर लिखना है बट आप बड़े डाउट हो तो किसी से एडवाइस लेते हो ना, सेम आप याद रख सकते हो. आर्टिकल 143 बेसिकली इट गिव पावर टू द प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. ओके. आई थिंक मैं आप लोग को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो. मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ. ठीक है.